Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with the current affairs. So, with this, I remember Marcus Aurelius, as he said that a secret of all victory is to see what others do not, right? So, for UPSC students, for any government examination preparing student, that hidden thing is current affairs, right? Because most people read news and forget it, right? But you must read news and connect it, right? To history, to society, to constitution, to ethics, to your own answers, right? So tell your mind every single day that I'm not studying current affairs to clear an exam. I am studying current affairs so that I can build myself, I can prepare myself to do something for the society, to understand my country, right? And once you understand the country, what will happen? If you understand the country, the exams becomes easier, right? And basically the answer becomes sharper and confidence becomes natural. And this is why we are here, right? To build our confidence, right? So with this, let's start our first current affair. So government opposition spark in Lok Sabha over Vande Mataram. Do you know anything about this? Huh? You read about this. Okay. Now let's imagine a big classroom is there, right? And where all important people of the country are met, right? Lawmakers are there, right? So they are met to discuss and decide important issues to us. So this classroom is the Lok Sabha. Okay. So the lower house of India's parliament. So on December 2025, 8 December 2025, the Lok Sabha turned into a bit of battlefield. Okay. So not physical but verbal, because there was a big debate on seemingly simple but emotionally charged thing, that is national song Vande Mataram, right? क्यों हुआ ये? इसलिए हुआ क्योंकि this is like a 150th anniversary of that song. So the government, that is the ruling party, it began the discussion saying this is the moment to celebrate and pay respect. But soon the decision turned into a face off between the government of the opposition. ठीक है, दोनों के बीच में they started fighting. ठीक है. So now the government side, that is led by the Narendra Modi, said Vande Mataram is not just a song but a symbol of a national duty of India, right? So it's like India's freedom struggle, right, and patriotism. So they argued in the past also that some political decision diluted in significance, right? So that the song was cut into pieces, okay? And this had long-term consequences to it. So including contribution to communal divisions or eventually the partition of India. तो इस तरीके से इस गाने को बेसिकली वो जो कट किया गया था, राइट, इस तरीके से इसको पेट्रियोटिज्म से और बेसिकली पार्टीशन से जोड़ दिया गया था, right? So the opposition side said that wait, this is not only about patriotism, it is more than that. It's about identity, right? About history and about respect for different religions, right? So you cannot only say about patriotism just because you want to govern, just because you want to show that about the patriotism from your side because you have the ruling party, you cannot name it in such way. ठीक है, तो क्या हुआ कि ऑपोजिशन ने बोला कि ये पेट्रियोटिज्म से ज्यादा की बात है बिकॉज इट इज लाइक रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड में, बिकॉज वी इंडिया आर लाइक डाइवर्सिफाई विद द कम्युनिटीज विद द लाइक डिफरेंट रिलीजन्स, राइट, इतने ज्यादा डिविजन हमारी कंट्री में, राइट? सो दिस सॉन्ग रिप्रेजेंट दैट, राइट? So they accused that the government of using the song now for political purposes, ठीक है, especially ahead of elections in some states. ये मुद्दा ही इसलिए उठाया गया है ताकि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो इस चीज को यूज कर सके, राइट? दे कैन बिल्ड सम इमोशन कनेक्शन विद द पीपल, ठीक है. सो दिस इज व्हाट ऑपोजिशन इज सेइंग. Now the debate got heated there and some said the song has been marginalized historically, और किसी ने बोला कि ये full version जो है contain करता है religious imagery को, ठीक है, और thus earlier compromises were made for social harmony. उसके बाद some saw that renewed the debate as sincere while others saw some it as a political motive, कि जो अभी present government है वो basically अपने फायदे के लिए okay. Now at the end of the session, what happened that there was like no concessions. So, but the fact that parliamentary devoted so many hours to this particular news, this shows about the patriotism. This shows that why and how it matters to us. और सिर्फ हमारे लिए नहीं, not to the citizen, but to the people who are sitting in the parliament, but to the people who are representing this country worldwide. उनके लिए बहुत ज़्यादा matter. Good morning. And
Okay, so we are understanding that the year 2025 is the 150th anniversary of Vande Mataram, a famous song written during the freedom struggle, written in 1875 by Bankim Chandra Chattopadhyay. Okay, so because of this, a special discussion was held in Lok Sabha, right? And to talk about this importance, history and place in India today. Okay, अब debate में हुआ क्या, अंकिता? So in the ruling party, it argued that in the past, due to political decisions, Vande Mataram was not given the respect it deserved. Okay? So they believe that it weakens our emotional power, our connection with our song, with this song, right? As it led to division in society, especially during the debate in religious and identity, right? So the point is that the song unites the nation and the should be, celebrated with full of respect. Okay? So imagine a national song like family heroism, and if ignored, people will like forget its value. So this is the debate is all about. So the government said that something similar about Vande Mataram is actually happening, right? So now because it is cut, right? So we are somewhere forgetting its history. So this is why it is like debated about. तो बात करें तो जो opposition है, they disagreed to it, right? They raised concern कि अभी इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अभी ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? Is this something political, right? So they felt that this timing might be political, especially close to the elections, because कुछ state में elections होने वाले हैं, right? So their debate should not be religious or communal sensitivity. ठीक है, ये citizen के साथ connection बनाना जो emotional आप engagement कर रहे हो, this is the reason that you are doing this. So history must be discussed with balance or inclusiveness, not for political advantage. अगर तुम्हें discuss करनी ही है history, तो do it, but not during this time. ठीक है, so there is a reason behind this. This is what opposition is saying, right? तो अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा वी मस्ट गिव मोर रिस्पेक्ट टू वंदे मातरम, ऑपोजिशन ने कहा कि हाँ बट डोंट यूज इट फॉर पॉलिटिकल और डिविजन. समझ में आई ये चीज? Okay. Now this is important because this tells us about the national symbols are powerful in politics and society. ठीक है, and it is important to understand कि कैसे हमारी history जो है interpretate हो सकती है, right, by different people and different religion also. ठीक है, now this tells about the how culture, nationalism और हमारे political interest जो है, especially हमारी anniversaries पे public debates बन सकते हैं, right, and how people can come with the controversial debates also. Is this understood? Got it? Now it is important to understand, but because it links with the topic modern Indian history, nationalism in India, parliamentary debates, हमारे culture identity और हमारा GS2 which is polity and governance, GS1 which is history and culture, right? Is this understood? So this 150-year-old anniversary of Vande Mataram led to a heated Lok Sabha. Government called for like greater honor to the song, while opposition questioned that is this something strategy, political strategy that you are coming up with, that you are questioning these things right now because there are like elections coming up in few states. Got it? Muslim League. What was that? What was mentioned? Okay, share it with me. Is this the news? Got to cover? Pakka? Okay. There was something about anti-national also. Anti-national of we not talking about all this instead of talking about the election. Exactly. That's what they said, that you always bring these religion issues during the election time. So the reason is not patriotism or you nationalism, right? The religion is that you just want to, politics. Understood? So this is the whole debate about. Okay. Now why UPSC should care about this? Because this debate shows about national symbols are power in politics and collective, right? And history can be interpreted, and then culture and nationalism and politics, how they are sensitive issues to our people. And I've said this before as well, when it comes to India, we are emotional food. Okay? Religion or politics. These two things serve us and we'll eat it without question. Okay? Next thing. What is India post Dhruva framework? Very important. Prelims में question बिल्कुल आएगा इस चीज में से. Okay. Now imagine that every house, shop, hut, every place in India, right, has a proper unique digital name. क्या हमारे पास digital name या फिर digital address you can say. जैसे हमारे पास एक proper address होता है, right? But now imagine that we have digital name and digital address. ठीक है? Like we have our email IDs, है ना? We have our UPI IDs. So instead of long addresses that are like often messy and incomplete, ठीक है, and very confusing, कि pin code बता दो, right? Gully number, right? Locality and these things. Like it's divided, subdivided, and subdivided, right? So instead of this, especially in rural areas, unplanned colonies या फिर remote hamlets में, right? This has been introduced. ठीक है? क्या introduce किया है? कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दैट इज DOP,
Okay. So through DOPs, it is basically government is trying to build with Dhruva. So under this plan, every location in India will get a digital identifier. या फिर हमें virtual address label दिया जाएगा. क्या दिया जाएगा? Virtual address label. ठीक है? जो कि हमारा link करेगा precise geo coordinates से. So instead of writing long those addresses, ठीक है? House number, street number, landmark, city, pin, right? So one can simply share a digital address label. ठीक है? It's like a ऐसे जैसे किसी को स्कैनर दे दियो, है ना, कि तुम यहाँ पे स्कैन करो, नॉट लाइक अ स्कैनर बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि ऐसे स्कैनर दे दियो कि तुम यहाँ पे स्कैन करो और ये तुम्हारे पास पूरी डिटेल्स आ जाएगी, राइट? सो दिस डेटा, दिस एड्रेस, दिस रिवील्स द फुल एड्रेस टू हूएवर नीड्स इट, या तो कोरियर्स में या फिर बैंक्स में या फिर किसी स्कीम में, इमरजेंसी सर्विसेज में, ठीक है, जो कि हम सारी चीजें क्राइटेरिया धीरे धीरे पढ़ेंगे कि क्यों यूजफुल है ये, ठीक है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं और इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होगी या नहीं, एंड इफ पीपल विल बी एबल टू यूज इट और नॉट, राइट? नाउ अगर बात करें इस ध्रुवा एम्स की, तो ध्रुवा बनाया इसलिए गया ताकि जो ट्रेडिशनल और मेसी एड्रेस है वो थोड़ा क्लीनिंग में डाइवर्ट हो जाए, ठीक है, और थोड़ा और स्टैंडर्डाइज्ड वे में फॉर्मेट हो जाए, ठीक है. सो वी विल हैव दिस डिजिटल एड्रेस that will be easy, right, precise and usable across government services, right, and it is will be used for logistics, e-commerce, emergency services और भी जगह पर ये यूज किया जाएगा. Understood? So why this innovation is important? Because India is a vast country, बहुत बड़ी country है with huge diversity, right? So cities, villages, informal settlements, right, areas with like little mapping, हर जगह पे अभी भी हमारे पास there are like places which are not on map, right? So इस mapping के लिए, right, rural हेडलाइंस के लिए हमारे लिए ये डिजिटल एड्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफन फेल्स इन मेनी प्लेसेस, ठीक है. सो दिस एम्बिग्युइटी मिसेस हाउसेस नंबर, लैक ऑफ लैंडमार्क्स और दिस बेसिकली क्रिएट्स द स्पेलिंग मिस्टेक्स आल्सो, इनकंसिस्टेंट स्पेलिंग देखने को मिलती है, राइट? तो इसकी वजह से मिसयूज होती है इंफॉर्मेशन, राइट? So this leads to error in mail, courier delivery, or difficulties in reaching someone in emergencies, problem in delivering welfare or services, right, or verifying addresses for the banking or identity also, ठीक है. So by giving every place a precise unique digital tag, Dhruva can solve many of these problems, ठीक है. So involving governance inclusions, ease of services will help us to analyze that why it is important and why we are studying about it. अब मुझे ये बताओ कि do you think it will be implemented? क्या क्या problems we can face? A digitalization problem, the gap between this. Okay, next. Because we have such large population, will it be implemented largely everywhere? Another question this comes up with, right? Exactly, large scale पे बहुत ज़्यादा time लगेगा, right? So when we talk about Dhruva, please write down that it is digital hub for reference and unique virtual address. Digital hub for reference, okay, good. For unique virtual address. So it is a new idea of Department of Post, Ministry of Communication से. तो इसका बेसिकली एम है ये करना कि डिजिटल एड्रेस सिस्टम दे दिया जाए पूरी कंट्री में, ठीक है, जस्ट लाइक वी हैव डिजिटल पेमेंट्स जैसे कि यूपीआई, ठीक है. तो थिंक ऑफ इट लाइक हाउ वी यूज यूपीआई आईडी इंस्टेड ऑफ टाइपिंग फुल बैंकिंग डिटेल्स, ठीक है. तो ऐसे ही हमारे पास ध्रुवा बना गया है डिजिटल एड्रेस, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल नेम्स टू इट. I just think all of these things like digitalization and everything is a kind of way to keep an eye on the citizens. Like there are countries who are more advanced than India who have been implementing online banking, all these things from so long. But they have like different reasons to it, and you think that government right now government is doing this to keep an eye on citizens. Like US can be a best example. It's like such a big country. Yeah. So many unions are together in that single state, and like still it has nothing like this digital address and all those things. It still has even it has Apple Pay. Apple Pay is like a platform where you do not share any details about your yes, you exactly. to some people, and you cannot trace the evidence of the payment. That's like done for. If it paid, it's paid. That's it. But in India, you can't. Apple Pay doesn't work because RBI has a guideline that it has to check each and every payment done in India and across this network, Indian network. So it's a kind of way to keep an eye. If we are coming up with the discussion, okay, if we are coming with the pointers that I have mentioned to keep the measures
to keep safety. अगर इन सब चीजों को लेकर if we are like implementing these things, these schemes, then it is very good. It's very good initiative. But yes, there could be another point also that it is invading our privacy. Everyone will have access to it. We'll be studying again कि government basically क्या क्या measures लेगी, right? And what are the like privacy concerns people will face and how government is going to tackle them. That we will understand. But yes, this is a very good point. That is these like are these schemes necessary or they are like put on us, capped on us just to keep surveillance, right? Okay, very other good point. So what this basically scheme is about, so this is like instead of writing that house number 14, lane number 3, near Jain Mandir, sector 8, Jaipur, Rajasthan, you may simply write something like this, ki, you know, adarsh123@gmail.com, and this is it. Okay, it's like giving a scanner, ki tumhare scanner, this is the address you have. So basically, yes, there are negative points to it because like easily people have access of your address, right? So address is as a service, another. जैसे ही मैं बोर्ड पे बोलूँ पीछे जाऊँ तो राइट डाउन वट एवर आई एम राइटिंग, ठीक है? तो दिस AAS, so basically person's address will be saved in secure digital format, so you can share your address only when you allow, ठीक है? So this has been mentioned, just like you allow apps to access location. तुम्हारी मर्जी के बिना that address will not go out, right? So it can be shared with government, banks, hospitals, e-commerce, etc. with only your consent, ठीक है? But then again there will be some loopholes कि government access कर सकती है to your data, right? Like you have mentioned. So अब ये काम कैसे करेगा? This is based on digpin system. This is based on digpin system. Okay, so earlier government started digpin, that is like which divides the whole country into tiny grids, ठीक है? छोटे छोटे grids में, तो grid का size था 4 meter into 4 meter, right? With this size they divided the places, ठीक है? अब each grid gets a 10 character code, ठीक है? उसके latitude और longitude के हिसाब से they are getting these 10 character codes, ठीक है? So that makes very small land area can have a unique code, ताकि उस कोड से हमारे पास उस एरिया का एक्सेस हो सके, राइट? सो this precision is very high, you know, it is useful for villages, it is useful for remote areas, for flats, for slums and for hilly regions also, as natural disaster is often seen there, ठीक है? उस चीज को मैनेज करने के लिए this was done, ठीक है? अब लोगों को क्या मिलेगा? People will get digital address identifier, digital address identifier, that is DAI. क्या होगा इससे ध्रुव? तो जैसे कि हमारे पास यूपीआई फॉर मनी होता है, राइट? हमारे पास ईमेल आईडी होती है फॉर कम्युनिकेशन, सो बट दिस वन इज फॉर योर एड्रेस, ठीक है? सो शेयरिंग एड्रेस बिकम्स, यू नो, क्विक, पेपरलेस और मिस्टेक फ्री हमारे पास हो जाएगा, right? But then again there will be some measures, there will be some legal support that will be coming up with. Government is planning to modify post office act that came in 2023, ठीक है? तो ये रिप्लेस करता है 1988 के एक्ट को. So the new act, you know, officially came into effect on December 24, 2023, ठीक है? अब बेसिकली ध्रुव हमारा जो है वो हेल्प करेगा एनालाइज करने में, उस पोजीशन पे उस जगह पर एनालाइज करने के लिए और यू नो एज यू सेड नजर रखने के लिए, ठीक है? टू टेक ऑल द मेजर्स अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो. अगर हम बात करते हैं कि किस किस सेक्टर में इंप्लीमेंट होगा, तो ई कॉमर्स में, ठीक है, या फिर डिलीवरी में, दैट इज फास्ट और मोर एक्यूरेट डिलीवरी हो. फिर उसके बाद हेल्प करेगा इमरजेंसीज में, जैसे कि एम्बुलेंसेज आ गई, ठीक है, फायर सर्विसेज हो गई, राइट? सो अगर क्विक लोकेशन डिटेक्शन मिल जाए वहां पे, इसलिए. फिर उसके बाद हेल्प करेगा गवर्नेंस और वेलफेयर में, कि अगर कोई स्कीम आ रही है तो इट कैन रीच टू राइट प्लेस, जहां पे उस स्कीम की रिक्वायरमेंट है, इट कैन रीच टू एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है? फिर उसके बाद हेल्प करेगा रूरल और अर्बन एरियाज में, हेल्प इन मैपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है? फिर उसके बाद हेल्प करेगा फाइनेंस और बैंक्स में, as it is like easy address verification for KYCs. Then it will help us into geopolitical tech also, कि integration with maps मिल सके, GPS हमें मिल सके. Understood? Now it is a digital public infrastructure, that is DPI, ठीक है? It reforms like UPI or Aadhaar or ONDC, ठीक है? इसीलिए it is very important as it come in UPSC prelims, ठीक है? Then it is like telling us about digital India also, e-governance also, smart cities also, public services delivery also, which is very important if you have to write your answers in ethics and essay and in society, right? And in polity as well. So useful for GS2 and GS3 governance, as it talks about tech and policy, and important in essay interview. Understood till here?
तो समझ में आ गया सब कुछ कि दिस इज अ डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। इट इज क्रिएट डिजिटल एड्रेस सिस्टम फॉर एवरी लोकेशन इन इंडिया, विल बी गिवन यूपीआई, जैसे यूपीआई के लिए एड्रेस दिया जाएगा एंड इट विल बी शॉर्ट एंड डिजिटल इंस्टेड। ये दिया गया है, इट इज यूजेस डीजी पिन, जो कि हमारा मैंने बताया कि ईच पोर्ट विल गेट अ यूनिक कोड, ठीक है। एक 10 कोड का कैरेक्टर मिलेगा तुम्हें जो कि आपको दिया जाएगा एंड देन टोटली डिपेंड्स ऑन यू दैट इफ यू वांट टू लाइक गिव एक्सेस टू समवन एल्स और नॉट, राइट। देन की कंसेप्ट ये है कि आपका एड्रेस स्टोर किया जाएगा डिजिटली और सिक्योरली, और आप ही आपकी कंसेंट से शेयर होगा बैंक से, कोरियर से और गवर्नमेंट से, और काफी चीजों पे अगर आपको चाहिए, आपका कंसेंट है तो, राइट। एंड इट रिड्यूसेस एरर, डुप्लीकेशन एंड कंफ्यूजन। अंडरस्टूड टिल है? Okay. Now next news. The story Dragon and Elephant, a new dance begins. Any idea about it? Yes. So once upon a time in Asia there were like two neighbors. ठीक है? One powerful and ancient, ठीक है, and that was called Dragon. इंडिया को क्या नाम है? ये तो चलो पावरफुल हो गया। इंडिया को क्या नाम है? अंकित, क्या नाम है? And the other was like wise, ठीक है, elephant. So the dragon represent one giant civilization and the elephant represent another, ठीक है. So together they share very like large history, very like famous history and culture and ambitions, right? So for decades their relationship was like very conflicting, ठीक है, and they had like ups and downs. Their friendship, their trust, right, their misunderstanding, sometimes that always had in conflict, right? So especially along their long and rugged border, they had like problems and they had conflict because of it. So, but now in 2025, there is a talk of new beginning, and this dragon and the elephant are like being invited to perform a tango, a dance. So these are the metaphors that we are using to understand this news, ठीक है? तो this dance is of cooperation, this dance is of balance, this dance is of coordinations, mutual respect के लिए. So this invitation did not come overnight. Over the last few months, like there have been like quite but significant moves that were seen, ठीक है, between these two countries. And so basically this diplomatic talks were there, border dispute negotiation भी चल रही थी, उसके साथ में इकोनॉमी और ट्रेड के बारे में भी चल रहा था, ठीक है. तो ये डिस्कशन सिर्फ वहां तक नहीं था, कल्चरल डिस्कशन भी दोनों कंट्रीज में देखने को मिला था, राइट. So they were like people to people exchange also, ठीक है, culture to culture talks were also there, ठीक है. तो रिप्रेजेंटेशन दोनों कंट्रीज में इस तरीके से महीनों से देखने को मिल रहा था. So finally we are coming to this tango dance. Understood this story? समझ में आई? So the idea is instead of like suspicion and rivalry, they finally, these two giant neighbors should try to trust and collaboration, right? So to rebuild confidence and strengthen some cooperation between these two countries and in trade also, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेड में, डिप्लोमेसी में, ग्लोबल इश्यूज में और हमारे ग्लोबल गवर्नेंस में भी, राइट. सो अगर समझा जाए तो दिस ड्रैगन एंड लाइक एलिफेंट टैंगो इज लाइक अ मेटाफर, राइट. इट इज लाइक अ होप टू दैट two big ancient power might like they'll have the recent relationship with each other, they'll work together and they'll shape the future for the coming generation, ठीक है. they'll future will be more stable, right. cooperation regional देखने को मिलेगा और उसके बाद ग्लोबल ऑर्डर्स भी देखने को मिलेंगी if things will work out as they were planning to do, ठीक है. कहानी समझ में आई? Why did they use such metaphors? I don't know. It's very sounding very powerful to me. Okay. How? We can say that, yes. I mean, they can present the news clearly. Why to use such? But it's engaging, na? Isn't it? Like we learned about dragon, we learned about elephant, and they are like coming with the word tango, and they are saying that now they are going to dance. So we are using this dance metaphor because when we dance, we have to match the rhythm, right? And if we are matching the rhythm, then we have to cooperate with each other. ठीक है, देखा ना, दो आदमी अगर साथ में डांस करें तो we have to match the step. So this is all it about कि अगर step match होंगे तो we are showing cooperation, and this is what this country has to do.
वही चीज तो करनी है, राइट? ओके, so in 2025, a new term started appearing in international news and discussion, that is dragon elephant tango. So this phrase is being used to describe hopes of better relationship between two major nations power. So dragon symbolizes one country, which is China, and elephant symbolizes the other, which is India, right? So the word tango, which is a dance performed by two partners, suggests that for both countries, they should like move together in coordination, trust, and rhythm, as we were discussing, right? So just like dancers do, right? So it means cooperation should be there, बैलेंस शुड बी देयर, पार्टनरशिप शुड बी देयर, एंड दे शुड बी लाइक नो स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो कि बहुत टाइम से इनका चल रहा था, तो दे हैव टू लाइक रिमूव दैट, ठीक है। अब ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2025 में राइट दिस मार्क्स द 75 years of diplomatic relations between the two, ठीक है, which you have not written. So this anniversary is being seen as like symbolic movement, ठीक है, a good time to reflect on the past and think about the future of their partnership, ठीक है। तो इस occasion पे finally these leaders, right, these analysts from both the states are taking about the possibility of starting a new chapter in their relationship. You know, one based on dialects and other cooperation. So instead of any mistrust or attention, they are finally coming to the conclusion. They are finally coming to the this settlement, ठीक है। अब इस टैंगो का अचीवमेंट क्या है, व्हाई दिस इज हेयर, तो आइडिया इज टू यू नो जस्ट पोएटिक लाइन ऑफ स्पीचेस, बट इट इज मोर देन दैट, देयर इज लाइक बिगर विजन बिहाइंड दिस, ठीक है। तो पहला है मोर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ठीक है। मोर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का मतलब है कि रेगुलर टॉक्स होंगी ताकि जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम की जाए, ठीक है। दूसरा होगा ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब है कि दोनों ही बेनिफिट करेंगे इन्वेस्टमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग से, टेक्नोलॉजी से, एनर्जी कोऑपरेशन से, इन सभी चीजों से, राइट। देन वी हैव वर्किंग टुगेदर इन इंटरनेशनल फोरम्स। इंटरनेशनल फोरम्स का मतलब है कि यूएन जो क्लाइमेट चेंजेस डिस्कशंस या जितने भी ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर हेल्थ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी गोल्स आएंगे, विल हैव डिस्कशंस टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा आता है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का मतलब है यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज, टूरिज्म करना, ठीक है। फाइनली विल बी हैविंग यू नो मोर इंटरेक्शन, विल हैव मोर कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ईच अदर्स यूनिवर्सिटीज बी सीन देयर, ठीक है। देन वी हैव पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब है कि स्पेशली इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर नेशंस आर लॉन्ग एंड सेंसिटिव बॉर्डर्स, ठीक है। नाउ बिकॉज इट इज because he's our neighbor, the country is our neighbor, so we have to maintain that relationship. We cannot afford to have the conflicts with them because of this border issues. Understood? So this is like saying कि instead of like competing and clashing, why don't you like grow together, ठीक है। तो यही पर्सपेक्टिव है, इतने टाइम से क्लैशेस चल रहे हैं तो फाइनली दोनों में बुद्धि आई एंड दे स्टार्टेड लाइक लेट्स ग्रो टुगेदर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एंड हैविंग कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो अब ये कोऑपरेशन बेनिफिशियल क्यों हो गया, क्योंकि वो दोनों ही कंट्रीज बहुत ज्यादा मार्केट में बड़ी है, राइट, मासिव इकोनॉमी है, इन्फ्लुएंशियल है इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आल्सो। सो इफ दे कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ फाइट, राइट, तो सप्लाई चेन्स क्या होंगी, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा एक्सपेंड कर सकती है, राइट। ट्रेड जो है हमारा इंक्रीज हो सकता है, राइट। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो एक्सीलरेट हो सकते हैं, राइट। तो इन सारी ही चीजों में हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। दोनों ही कंट्री जो है हमारी बेसिकली ग्लोबल वॉइस है, राइट, इन ग्लोबल डिसीजंस, राइट। देन डेवलपिंग वर्ल्ड कुड बेनिफिट एज दे सेट अ मॉडल ऑफ कोऑपरेशन विद अस, ठीक है। तो अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो बेसिकली दो कंट्रीज दोज आर लाइक वर्किंग टुगेदर कैन अचीव मोर देन लाइक फाइटिंग सेपरेटली। दोनों साथ में मिलकर अगर कुछ अचीव करेंगे तो ज्यादा ग्रो करेंगे देन फाइटिंग सेपरेटली। अंडरस्टूड? अब ये कॉम्परेशन सिंपल तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो बॉर्डर क्लैश, ठीक है, रीजन नंबर वन, बॉर्डर क्लैश जो कि पास्ट में हमें बहुत सारी लड़ाइयां देखने को मिली है, राइट। फिर उसके बाद ट्रू प्रेजेंस भी देखने को मिलती है, दैट इज लाइक स्टैंड ऑफ अलोंग द एलएसी व्हिच इज लाइक कंटिन्यूइंग स्टिल। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक राइवलरी है हमारी एशिया में, ठीक है, अब बिकॉज बोथ वांट इन्फ्लुएंस ऑफ इट। फिर उसके बाद डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजीज आल्सो, ठीक है, स्टार्टिंग से कंफ्लिक्ट ही वही रहा है हमारे पास, ठीक है। सो इवन इफ लीडर्स टॉक अबाउट टैंगो, राइट, रियलिटी थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इससे। Yes, we have this idea that let's grow together, but idea is like if we are able to implement it and how we are implemented, that's the question that we are coming up with, ठीक है। तो this dance only works when both partners understand each other's steps, ठीक है। अगर हम उनकी आइडियोलॉजी को समझते हैं, वो हमारी आइडियोलॉजी को समझते हैं, राइट, वो अगर वो हमारी प्रेफरेंसेस को समझते हैं तो हम उनकी प्रेफरेंसेस को समझेंगे, और दिस इज द ओनली वे दैट वी कैन कोऑपरेट विद ईच अदर, वी कैन डांस टुगेदर, ठीक है। अब देयर मींस कि यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, नेगोशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बेसिकली सॉल्व ऑल द इश्यूज, यू नो कोर इश्यूज, ठीक है, जो पहले कभी चल रहे हैं पीछे से, पहले उन्हें सॉल्व किया जाए, ठीक है, देन ओनली वील बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब
ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए फॉर जीएस पेपर 2, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड नेबरहुड पॉलिसी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है, जो कि बहुत बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स में अनदर न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो, पक्का क्वेश्चन आएगा इसका भी। ऐसे और इंटरव्यू में कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट एशिया में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर दिस यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दिस, इज दिस अंडरस्टूड? So from this we got the idea dragon and elephant they are used as a metaphor, ठीक है, और ये 75 years of diplomatic relation है, this is why it is coming in the news. And finally this new idea tango is about the cooperation and balance and trust like our dancers, ताकि हम basically cooperate कर सके, we can match the step with their ideology and they can match the ideology of us. So this is more diplomatic engagement and dialogues, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन की यहाँ पे बात होगी, फिर उसके बाद यूएन, ब्रिक्स, क्लाइमेट और ग्लोबल इश्यूज, अगर हम लोग साथ में काम करते हैं, if we fit together both the countries, right? So these are the discussions that we can have together, right? So shift from rivalry and suspicions towards coordination and partnership, finally the shift will be seen, understood? Now it is important because it is stronger supply chains, right? It will boost manufacturing infrastructure. It is going to talk about ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लार्जर वॉइस मिलेगी हमें ग्लोबल गवर्नेंस में, क्योंकि दोनों ही लार्ज कंट्रीज है, राइट? इकोनॉमिकली ग्लोबली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्रीज को, राइट? देन मॉडल फॉर डेवलपिंग नेशंस एंड द चैलेंजेस वी आर गोइंग टू फेस इज कि हमारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है, राइट? फॉर विच वी आर फाइटिंग लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. Then another strategy rivalry in Asia, right? And then it is differences in political system and ideology. Trust and building is slow and complex, as it is mentioned in the article. थोड़ा सा ज्यादा complex चीजें हैं. Rest we want to move forward with China, but then the reality is more complex than actually it is. Now, democracy's paradox that chose people of the state. Any idea what it is about? Yes. फाइनली वही न्यूज वापस से, ठीक है, एज इट वाज गोइंग बिफोर, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, राइट? इट्स अगेन इन द न्यूज, इट्स अगेन देयर. तो इसको कहानी की तरह दोबारा से समझेंगे कि इमेजिन करो कि एक लार्ज किंगडम है, ठीक है, एंड द किंगडम इज नोन एज डेमोक्रेशिया, ठीक है? तो डेमोक्रेशिया ऑल एडल्ट्स आर देयर, लाइक दे आर सपोज टू बी पार्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द people, right? So these citizens who give power to the vote, right, and shape the kingdom's destiny, that's how like this democracy is supposed to work, ठीक है? But people create the state and the state serve the people, ठीक है? ये relationship होता है दोनों में, right? But now imagine before the someone is allowed to vote or enjoy the citizenship right, the kingdom asks them to prove that like they like who they truly belong, ठीक है? From which country do they truly belong, ठीक है? उनकी identity के बारे में पूछ लिया जाता है. The state says show us the documents and otherwise you may not count it among our people, right? So this is the situation in India today. The process is called a spatial intervention revisions. Please write down SIR. So this process, spatial intensive revision of like electoral rolls, means elections authorities are like reviewing voter list across many states, ठीक है? जो भी duplicates list है, right? Voter list है, right? And all the entries of known citizens, right? On paper this sounds very reasonable, ठीक है? After all हमारे citizens की बात है, ठीक है? Because our citizens should have right to vote, ठीक है? Then, but there is the twist. Just having our Indian passport or being in the provisional voter list or holding a voter ID, none of these are like ultimate proof of being citizens. Because documents can be forged, right? They can be disputed, okay? Or they can be challenged. So the real hardened problem is that lies in each individual to prove their mentorship to their membership in the democratic people, okay? So in other words, we can say that the state, right? This state which is democracy is supposed to exist because of its people, right? Ending up deciding who is the people, okay? Exactly जो people की हम बात कर रहे हैं, who exactly they are they fitting in the criteria of the government or not? If not, they should be removed. This is what government is saying, ठीक है? अब रिजल्ट क्या होगा कि बहुत ज्यादा एलिजिबल पीपल, राइट, दे माइट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, क्योंकि अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी बिकॉज पॉपुलेशन इज सो ह्यूज, ठीक है? ऐसे तो नहीं है कि प्रिसाइज डिसीजंस लिए जाएंगे, देयर विल बी पीपल हु विल बी रिमूव्ड जो सच में एलिजिबल है, राइट? एज वी हैव रेड दिस इन द प्रीवियस न्यूज आल्सो, एक न्यूज हो रही थी ऐसे सिमिलर. यस.
another homework of yours that you will be reading and coming up with tomorrow. ठीक है? So the question becomes that in a democracy, who gets to define citizens? And when the state claims the power, does it actually undermine the very principle that people create the state? ठीक है? ये क्या वही state है जो people represent करती है या नहीं है, right? Because citizen itself, because a state, right? It is itself creating the scenarios, right? Where people are questioned, where citizens are questioned, right? So recently this important discussion has come up in India. Do we have any single document that can prove that someone is definitely an Indian citizen, right? So this says no, we don't have any single document. Okay? So there is no single document which can consider final and unquestionable, right? And which can tell that this is the proof that I'm a citizen of this India, right? So even documents that we normally assume are like proof, like जैसे passport हो गया, आधार हो गया, voter ID हो गया, even they can be false also, right? क्योंकि documents can have errors, right? They can be forged and they are often misused based on the self-declaration information, right? So being a voter list does not automatically mean that you are legal here and you have the right to vote here, right? So this is the whole debate is about. ठीक है? अब ये debate शुरू की हुई क्योंकि Election Commission of India, that is ESI ने बेसिकली एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है विच इज SIR, दैट इज स्पेशल इंटरवेंशन रिवीजन. ठीक है? इसका मतलब ESI चेक करेगा कि वोटर लिस्ट अपडेट हुई है या नहीं. ठीक है? और जो भी अपडेट हुई है सारी स्टेट्स में, राइट, कि कौन किस किस के पास राइट है वोट करने का, राइट, एंड हु शुड बी रिमूव्ड एंड व्हाट प्रूफ शुड पीपल कंसीडर एज देयर सिटीजन. ठीक है? तुम सिटीजन हो, इस चीज का प्रूफ क्या है वो कंसीडर किस बेसिस पे करेंगे, राइट? दो दिस रिवीजन एक्ट हैज बीन स्टार्टेड, राइट? So this led to very bigger debate. क्या कि does the election commission even have the legal power to decide its citizenship? ठीक है? This is the question that you can write and it could be asked in the mains also. Then हम बात करते हैं कि किसके पास अथॉरिटी है ये डिसाइड करने की कि सिटीजनशिप लीगल है या नहीं. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द पावर लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है? अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स और कासी जुडिशियल बॉडी के पास, जो मैंने पिछले करंट अफेयर में डिस्कस किया था, सिटीजन एक्ट प्रोसीजर्स के पास भी, राइट? सो दे आर्ग्यू दैट ESI's जॉब इज टू मेंटेन वोटर लिस्ट, नॉट टू फाइंड आउट कि किसके पास एलिजिबिलिटी है या किसके पास नहीं है, राइट? वो उसकी ड्यूटी ही नहीं है. तो इसीलिए नेशन वाइड में दिस वेरिफिकेशन अंडर SIR इज लाइक नॉट स्ट्रांगली लीगल बेसिस, राइट? दिस इज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस. ठीक है? समझ में आए? अब बात करते हैं कि सिटीजनशिप इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे. ठीक है? अगर हिस्टोरिकली इसका कंटेक्स्ट देखिए तो सिटीजनशिप बाय बर्थ, ठीक है, बाय सोल इट शुड बी देयर. ठीक है? जब हम इसके बारे में बात करते हैं दैट इफ यू आर बोर्न इन इंडिया, राइट, यू वर जनरली अ सिटीजन. सो बट ओवर द ईयर्स, स्पेशली आफ्टर पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन प्रेशर, दिस हैज बीन चेंज्ड, राइट? थोड़े से अमेंडमेंट्स आए इसमें. 1987 में आया, 2003 में आया, 2004 में आया, राइट? तो ये सारे चेंजेस आए. 2004 में अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अगर 2003 की बात करें तो अगर स्ट्रिक्ट रूल्स आए कि पेरेंट्स कैन नॉट हैव लाइक इलीगल माइग्रेंट्स, राइट? तो जब 1987 की बात करें तो अगर तुम यहाँ पे तुमने सिर्फ बर्थ लिया है, राइट, ओनली दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है? तो ये सारी डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे चेंजेस, अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिले हैं. ठीक है? अब सिटीजनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट बर्थ बट ऑल्सो अबाउट इमिग्रेशन हिस्ट्री ऑल्सो. ठीक है? इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है टू मैनेज दैट, राइट, to prove that citizenship, right, it becomes very difficult, especially for poor, right, for people who migrated, right, for rural population as well. ठीक है? और उनके पास बहुत ज्यादा कम डॉक्यूमेंट्स है तो इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इम्प्लीमेंट करना, राइट? देन दिस क्वेश्चंस द अथॉरिटी आल्सो कि अगर आप लोग ये मेजर्स ले रहे हो, आर यू कंसीडरिंग दिस पॉइंटर्स और नॉट? इफ यू आर नॉट कंसीडरिंग देन देयर इज सम लैकिंग गोइंग ऑन द एक्ट. ठीक है? समझ में? तो डेमोक्रेटिक डायलेमा यहाँ पे मैं देखने को मिला है, व्हिच कैन कम इन द केस स्टडी, कि democracy is based on the principle that is people choose the government, but if the first state decide who the people are, then power shift to this is like giving to a more paradoxical statement कि people are sovereign in democracy, right, but there are the state who decide qualifies as citizens that who can vote and who can not, right? तुम डिसाइड कर रहे हो अपने ही लिए कि तुम मुझे वोट करोगे या नहीं वोट करोगे, राइट? दिस shows somewhere like what about the government? ओके, विद दिस वील रीड अबाउट थ्री थिंकर्स. ठीक है? पहले जान लेते हैं कि अब यहाँ पे चीजें गलती कहाँ पे हो सकती है. तो अगर हम पोस्ट एग्जांपल की बात करें स्टेट का, तो दिस शोज दैट व्हाट हैपेंस इफ सिटीजन वेरिफिकेशन बिकम्स स्ट्रिक्ट. ठीक है? तो थाउजेंड्स वर मार्क्ड एज डी वोटर्स, ठीक है, डाउटफुल वोटर्स. ठीक है? which you have to write. So many people could not show proper documents. ठीक है? They were like removed from the voter list, या फिर they lived in fear of like being declared as no citizens also. तो किसी किसी का basically they were like stuck in this legal limbo, क्योंकि ना तो वो सिटीजन्स हैं ना यहाँ के, ना वो फॉरेनर्स हैं. दे आर लाइक स्टक इन बिटवीन समवेयर, राइट? एज आई सेड कि माइग्रेशन इतना ज्यादा हुआ था, लाइक
people are like migrated from there, उनके पास proper legal documents नहीं है जो actually government को चाहिए, right? Then this is like risk of exclusion also, statelessness also, and this is like even about the deportation also. Deport कर दिया जाएगा. So this highlights that how document burdens hit the poor, but it hits the rural areas most. ठीक है. अब now this is important for polity. It is important for polity because it talks about citizenship acts, right? It talks about constitutional rights, right? It is important in election and democracy also, right? It is important for ethics also, GS2 also, essay and interview also. Understood? Ab, there are three philosophers which actually and perfectly fit in this criteria. Okay, तो हम बात करते हैं पहले जैन बौद्धन की. Now this philosopher thinks, this thinker says कि sovereignty क्या होती है? What sovereignty is? Governance, okay. So according to Jean Bodin, sovereignty is absolute or basically indivisible. ठीक है? Absolute and indivisible. ठीक है? I'll be telling you about these thinkers. Now you have to tell me that in which category India falls. ठीक है? John Austin की बात करें तो John Austin और Bodin somewhere says the same thing. ठीक है? About the sovereignty. ठीक है? तो अगर हम John Austin की बात करते हैं तो John Austin says that sovereignty is legal authority who give commands, right, backed by sanctions. मतलब ये बात करते हैं commands की और sanctions की, right? And these both talks that there is only one authority, one sovereignty. ठीक है? अब वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, या तो पार्लियामेंट के फॉर्म में हो, मोनार्की के फॉर्म में हो, बट देयर इज वन सोवरेनिटी, वन गवर्नमेंट, ठीक है, वन डिसीजन मेकर हु आर गोइंग टू टेक ऑल द डिसीजंस, राइट, एंड वी हैव टू फॉलो दैट. ठीक है? तो जीन बॉर्डन बोलते हैं कि एब्सोल्यूट है, इंडिविजिबल है, राइट? whatever the government is saying, whatever that authority is saying, whatever that sovereignty is saying, you have to go with that, right? And to this John Austin says somewhere there like links are made, they have like same theory. So they says that it is like commands, right? Sovereign is going to give commands that these are the particular rules and regulations that you have to follow, right? And it is going to be backed with the sanctions. ठीक है? Sanctions अगर punishments अगर नहीं follow करोगे तो there are certain punishments. There are certain punishment if you don't follow those rules and regulations. ठीक है? Then indivisible का मतलब है there is only one authority, एक ही authority है, कोई division नहीं है power का, right? But in India we are following different than this. ठीक है? जो last news हमने पढ़ी है different है, right? Now when we talk about another philosopher, that is Lasky. ठीक है? Now Lasky says that this division of power is must, right? So this division of power is must, that sovereignty is not absolute, it is not real power list, but multiple groups are there, right? Multiple groups का मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग डिसीजन मेकर्स होंगे हमारे पास. Now this is what these thinkers are saying. Now tell me from this, please write down that which philosopher is going with India's reality abhi. Lasky. Why? Because we are following the federalism, the division of parts, ठीक है, center, state, and then there is like local bodies, local government में divisions है, right? So these are the theories which tells us about. तो कहीं ना कहीं isn't this news following the John Austin and Borden theory? ठीक है, we are implementing rules and regulations without thinking कि उन पे citizens पे क्या impact पड़ेगा, what are the criteria they are facing, what are the situation that they are facing, right? So this is how we have to understand the news. ठीक है, link up करना सीखो, then you'll understand it. So for this we are ending, and I'll see you tomorrow at the same time.